Good morning, everyone. Today we are going to study chapter 3. Why do we need a parliament? Have you ever heard about the politicians and politics but don't know what it all really means? So, what do you mean by parliament? क्या मतलब है पार्लियामेंट से? That's all right because what goes on the parliament can be kind of confusing at the time. The parliament is the building in New Delhi where the people's representatives from all over the country sit and legislate over new laws and which laws to pass. The parliament is also the most important political body in a country because it decides which direction the country is going to be formulating and passing such laws. What going on in the parliament affect everything that happens in the country, which is why it is incredibly important. So we start with why do we need a parliament? A parliament is a legislative body of the government that I already told you. It allows citizens of India to participate in decision making and be in charge of the government. Hence, it makes the most significant symbol of Indian democracy and primary feature of the constitution. So why should people decide? लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे? So India got independence on 15 August 1947. People used to fear the British government and were unable to give or agree with their decision. When the struggle for independence started, numerous people participated in the struggle and got inspired by the decision-making quality and ideas of freedom which were introduced by the freedom fighter. They also faced backlash and were scared while opposing and criticizing the decision made by the British government. So why should people decide? Because at the time of independence, the freedom fighter proposed to the people that they can choose what they want. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पीपल को चॉइस दिया कि वो जो करना चाहते हैं वो उसे कर सकते हैं, जिन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं वो उन्हें बना सकते हैं. सो दैट वाज द मेन पॉइंट. उसी जगह पे डिसाइड हुआ कि अब इंडिया में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड द पीपल. तो जो भी लॉज बनेंगे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे वो पीपल ही बनाएंगे, उन्हीं में से बनेंगे एंड पीपल के लिए ही बनेंगे. ओके, सो दिस इज द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया. द फर्स्ट इमेज shows the parliament house which has two houses, that is the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Second picture is of Rajya Sabha, that is the Council of State. It has the total strength of 245 members and is chaired by the Vice President of India. And the third image is of Lok Sabha, that is the House of the People, with a total membership of 545 and is presided over by the speaker. Okay, the role of parliament. क्या रोल है पार्लियामेंट का? The role of parliament, it is created in 1947 and the Indian parliament is an expression of the faith that people of India have a principle of democracy. That I already told you कि क्या रोल है पार्लियामेंट का. इन 1947 इसे बनाया गया था एंड द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ एंड द पीपल ऑफ इंडिया. जो इंडिया के पीपल हैं उनका फेथ था डेमोक्रेसी के अंदर, उसे रिप्रेजेंट करता है. एंड पार्लियामेंट हैज़ इमेंस पावर as they are representatives of the people. Okay, our country has numerous constituency and each constituency select one person to the parliament. Numerous constituency है इंडिया के अंदर और हर एक constituencies में से एक person को select किया जाता है for parliament. The elected candidate become a member of the parliament और MPs. जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में से, उनमें से जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं दैट विल बिकम द एमपीज, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दीज एमपीज टुगेदर फॉर्म अ पार्लियामेंट. द लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. हर 5 साल में से एक बार लोकसभा को सिलेक्ट किया जाता है. द कैंडिडेट हु जनरली कंटेस्ट इलेक्शंस बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज
The parliament perform various functions such as selecting the national government, making laws, controlling, guiding and informing the government. Okay, so that we are going to study one by one. So our first topic or the work of parliament is the selecting of national government. The Indian parliament consists of Lok Sabha, the Rajya Sabha and the president. That I already told you कि लोक सभा होती है, राज्य सभा होती है and president होता है. So लोक सभा क्या है? After the Lok Sabha election have been held, a list is prepared that shows the number of MPs. ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्स्टिट्यूंसी में से सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस होते हैं एंड देन वो क्या बनते हैं, MPs बनते हैं. दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs इलेक्टेड टू द लोकसभा. और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs होते हैं वो इलेक्ट होती है फॉर लोकसभा एंड वी कैन कॉल इट एज द विनर. एंड पार्टी को फॉर्म किया जाता है, दैट फॉर्म द गवर्नमेंट. ओके, सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा इन विच 2 is 543 plus 2 is the Anglo-Indian nominated. Okay, so 543 plus 2 that is 545 members हैं लोकसभा के अंदर. To have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 member or more. जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, अगर उसमें लोकसभा या फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी पार्टी को चूज़ करते हैं तो उसमें 543 का हाफ दैट इज़ 272 मेंबर्स उस पर्टिकुलर पार्टी से होना चाहिए. ओके, द मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी दैट डू नॉट हैव द मेजॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूट द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट. और ऐसी पार्टी जिसमें इतने मेंबर्स नहीं होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अपोजिशन. ओके, सो when different political parties join all together to make the government, this is known as the coalition government. जब बहुत सारी political parties यानी कि किसी में भी majority नहीं है, equal numbers हैं, एक साथ मिलकर government बनाती हैं तो इसे क्या बोला जाता है, coalition government. This usually happens when a single party doesn't get majority position in Lok Sabha. Okay, the leader of the majority party become the prime minister of the country and he rules the Lok Sabha. जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है दैट बिकम द प्राइम मिनिस्टर. ओके, वन ऑफ द मेजर टास्क दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू परफॉर्म once he come to the power is to assign portfolios to its minister. Okay, for example, health, defense, finance, textile. Okay, so Lok Sabha selects the executive, who is a group of the people who together implement the laws created by the parliament. Now we are going to study about the Rajya Sabha. The Rajya Sabha is known as the upper house, okay, of the Indian parliament, and it is the permanent house of the parliament. It have total 233 elected member plus 12 members who are nominated by the president of their immense contribution to fields like science, arts, literature. Okay, the Rajya Sabha functions as the representative of the state. In the parliament, its main role is to review and alternate the laws passed by the Lok Sabha. क्या वर्क होता है बेसिकली राज्य सभा का कि जितने भी लॉज बनाए गए हैं बाय लोकसभा उन्हें रिव्यू करना और उन्हें पास करना. ओके, इट ऑल्सो इनिशिएट्स द बिल एंड लेजिस्लेशन विच पासेस थ्रू द राज्य सभा एंड देन गोज टू द लोकसभा. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल गाइड. ये तो हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेलेक्टिंग द नेशनल गवर्नमेंट. That is the work of parliament. Now second work is to control, guide and inform the government. The parliament while in session begins with the question hour. Okay, the question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. जो पार्लियामेंट है उसका सेशन कैसे स्टार्ट होता है, बाय क्वेश्चन आवर. ठीक है, और क्वेश्चन आवर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है इन विच एमपीज क्या करते हैं, डिबेट करते हैं.
जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी वर्क चल रहा है कंट्री के अंदर उस पर. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इन विच द पार्लियामेंट कैन कीप अ चेक ऑन द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन ऑल्सो प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकम आर्बिट्री इन नेचर. बिना क्वेश्चन आर के कोई भी स्टेट कोई रूल को फॉलो नहीं करा सकता है. कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्री के अंदर उसका डिस्कशन पहले कहाँ होगा? क्वेश्चन आवर में. कहाँ पे? पार्लियामेंट में. ओके, बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग. क्वेश्चन आवर की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये भी पता चल जाता है कि अगर हम किस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है. एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट. और जो पीपल का ओपिनियन है, बिकॉज जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें किसने सेलेक्ट किया है? पीपल ने सेलेक्ट किया है, तो उनका ओपिनियन भी उन्हें पार्लियामेंट में पता चल जाता है. The opposition plays an important role in the question hour as they are most critical of the policies and decision of the government. They raise important questions regarding the demand of the people and the working of the government, and it also helps in increasing the political awareness of the people. Okay, now the last topic is lawmaking. Okay, so lawmaking is also an important function of the parliament. All the proposals from the legislative assembly are brought to the parliament in the form of bill. जितने भी प्रपोजल है वो कैसे आते हैं पार्लियामेंट के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ बिल. द बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट हाउस बाय एनी मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो उसके ऊपर 3 रीडिंग्स परफॉर्म होती है. First is introduction of the bill in Lok Sabha or Rajya Sabha. Second is discussing the principle and provision related to the bill. And the third is discussing the bill as amended to pass. Okay. Now who are the people in parliament? कौन लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर? As you can see in the table that in the first Lok Sabha that was elected in 1951 to 52, there were total voter turnout was 61.16%. तो हम देख सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं. Actually the parliament has different people belonging from different backgrounds. They belongs to different political parties and have different ideologies. Over the year, we have witnessed the increase in political parties participation by the Dalits, minorities, and backward classes. Okay, so यहाँ पे we have the table that shows the percentage of population. Like in 4th Lok Sabha, which was elected in 1967, total voter turnout was 61.33. In 5th Lok Sabha, which was elected in 1971, and the total voter turnout was 55.29, and so on. So, it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. क्यों नहीं है? There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. जैसे ST/SC कास्ट है, अगर वो वोट नहीं करेंगी तो टोटल वोटर टर्नआउट तो वैसे ही कम होना है, राइट? सो इसलिए क्या होता है यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये वोटर टर्नआउट आया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल हु वोटेड. ओके, so in the parliament some seats are reserved for ST and SC to give equal advantage to the backward selection of the society. So because of this it helps in strengthening and democracy. Okay, that's it. Thank you everyone.